called cell. Chapter complete हुआ. Hope you have read the textbook also. Is there anyone who didn't read at all? You did not read the textbook? Are you a new joining? You have joined from today only? Even you are a new joining. Basically, like we were supposed to start. Beta, stop talking now. We were supposed to start with the new chapter, that is tissues, but since there is new joining in the class, I won't be starting with the new chapter. And even with the center point school, like you have your PA1 on Tuesday, yes. So instead of starting with the new chapter tissue, we will be doing the revision of the first chapter first, cell, and then from next class we'll switch on to the new chapter. So like I had asked you to get the textbook and the tuition register. Hope you remember that, to get the textbook and tuition register. नहीं किया होमवर्क सर? नाम लिख लो, ग्रुप में डाल दूंगी मैं. आप मुझे नाम दे देना किसने नहीं किया है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी. न्यू ज्वाइनिंग, you were absent. So but then homework was there in the group only. Homework was there completely in the group and you were supposed to do it. Speak to sir for the notes. Sir देंगे notes. You still want to talk? If you will talk, I won't be able to start with the class. Now please take out your registers. I want you to take out your registers. I'll be asking you few questions and you are supposed to reply me. Okay? So we had already done the first question. What are, who will read this? Read करो, group में chorus read करो. First question. What are thermophiles? आंसर कौन बताएगा मुझे? हाँ? Heat loving organisms are called? Can you search this answer in your textbook also? Next question. Where does a cell come from? Cell कहाँ से आती है? The cell arises from an pre-existing cell. How have the technologies? Hope beta the new joinings. You just listen to me. Thermophiles are the heat-loving animals. Where does the cell come from? Cell come from the pre-existing cell. How have technological interventions facilitate the creation of new knowledge in understanding the world beyond the naked eyes? Who will find out the answer from the textbook? Open your textbook and just see. Who can give me the answer? Because now, like the way of teaching and way of questioning is completely different. We got, yes beta, by inventing microscopes. How is the cell the structural and functional unit of life? ढूंढो textbook में, ढूंढो और let me know. Just find it out in the textbook and let me know the answer. Question number 4. ढूंढो जल्दी और बताओ. How is the cell the structural and functional unit of life? I want you to read your textbook and let me know the answer. And the one who will give me the maximum answer, I am going to write it in the group star of the class, star of the day. जिसने मुझे मैक्सिमम आंसर्स बताए. टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है. फाइंड इट आउट.
How is the cell the structural and functional unit of life? Huh? Open your textbook and check it out. Open your textbook. I want you all to find it out. Question number 4. How is the cell the structural and functional unit of life? कौन बताएगा आंसर? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, how many marks is tomorrow's test? Tomorrow's test, how many marks? It's of 25 marks. Okay, ma'am. Just find out the answer and let me know. हाँ बोलो. Because और क्या बोल सकते हो? Yes. All organisms are made up of cells, or cell is the structural and functional unit of life. Next, how does the cell multiply? The cell multiply by cell division. What do you mean by the limit of resolution of the human eye? Limit of what? फिर से रिपीट करो. Yes. Next, what is plasma membrane or the cell membrane? What is plasma membrane? लाउड है बेटा, सबको सुनाई आना चाहिए. Permeable membrane. What else? It allows substances to, while restricting the entry of certain other substances. Very good. Next question. What do you infer from activity 2.2 पेज नंबर 11? अब ये जो हमने एक बार एक्सप्लेनेशन किया, एंड नाउ विल डू द रिविजन ऑफ 1 mark questions and activity so that the NCERT like the chapter should be thorough with you all. ठीक है? Activity 1.1 क्या बता रही है? What do you infer from the activity 1.1? What? Activity 1.1 क्या infer करती है? Sorry, 2.2 page number 11. 2.2 activity that the organisms which you cannot see with your naked eyes can be seen with the help of the compound microscope or electron microscope. What is osmosis? बोलो. Spontaneous movement of through a semi-permeable membrane. Yes. What is diffusion? Only raise your hand. बोलो आप. Lower concentration particles. Yes. Will you write osmosis में particles? In osmosis you will write the movement of water from higher concentration to lower concentration. But when you'll write diffusion, in diffusion you will write the movement of particle or a substance from higher concentration to lower concentration. Now, can you tell me question number 12, what happens when a cell is kept in a salt or sugar solution of different concentration? Of different concentration. Different concentration मतलब क्या होता है? I'll explain you. Like एक cell है, concentration outside is more,
So what will happen? The cell is likely to swell. If the concentration outside is less, shrink. If the concentration inside the cell and outside the cell is same, so that means what? Which solution? If the cell shrinks, which solution? And if the cell shrink हुई तो hypotonic होगा क्या? Hypertonic. और अगर cell swell हुई तो hypotonic. Yes. Explain the structure of cell membrane. Cell membrane का structure बार बार बताया है मैंने. Who will tell me what is cell membrane? Fluid mosaic model is cell membrane. What is cell membrane? बोलो. An outside layer which protects the, yes, a thin boundary wall which protects the cell and its component. Next question, what is a cell wall? Cell wall क्या है? Cell wall क्या है? Where it is present? Is cell wall present in animal cell? What is the function of cell wall? One at a time, one at a time. To provide rigidity, turgidity to the plant. ठीक है? And explain the function of cell wall in the plant. Cell wall में का क्या function है? The same thing. It provides rigidity and turgidity to the plant. Makes the plant stiff and firm. Why do plant cell not shrink in concentrated sugar solution? Hypertonic solution. क्यों नहीं shrink होता? क्या बोलोगे? Because of the cell wall. Very good. Or animal cell shrink in concentrated sugar solution because it does not have cell wall. What argument would you give for the necessity of a cell wall in plant usually fixed in or as a cell membrane? Sorry. What argument would you give for the necessity of the cell wall in plants usually fixed in one place versus animal usually moving from one place to another, place to place? Because बोलो. Yes. Yes. Yes, plant cell needs turgidity and rigidity to stand stiff and firm. That's why they have a cell wall. And animals move from one place to another. That's why they do not have a cell wall. Next question. Question 19 है ना? What consequences would you predict for a plant cell if the cell wall were to be fixed as a flexible as a membrane? It won't be firm. It won't be providing turgidity and rigidity. There won't be any stiffness. Yes. Next. Why is it important to cut 2 potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in the different liquid? For fair and consistent results. Name the 3 basic part of the cell all together. Basic part सब लोग बोलो. Nucleus, cytoplasm and yes. What are cell organelles? Cell organelles क्या है? Which are present in the cell and they perform different functions. What are prokaryotic and eukaryotic cell? Prokaryotes और eukaryotes बताओ क्या क्या होते हैं? Prokaryotes lack membrane bound organelles. टेक्स्ट बुक में बेटा दिया है, नोट्स में आपके पास में नहीं लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यू कैन सी दिस. ये दिख रहा है ना टेबल? हाँ, सेंटर पॉइंट आपका पेपर है पेज नंबर 15 में ये दिया हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, एब्सेंट इन यूकैरियोट्स.
diameter 1 to 10 um, 10 to 100 um. Number of cells usually unicellular, can be unicellular or multicellular. Membrane bound organelles are absent, membrane bound organelles are present. Nucleus absent, nucleus present. अब यहाँ पे क्वेश्चन वो कैसा करेगा, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. He will say differentiate between eukaryotes and eukaryotes on the basis of nucleus, on the basis of membrane bound organelles, on the basis of cell of an organism. So you should know all the difference and you should know what has to be written in that point. Clear? So for that you need to revise the table. Book में उसको star mark करो और लिखो learn. Next, what is nuclear membrane? Nuclear membrane क्या है? जल्दी बोलो, what is nuclear membrane? Just a second. Yes, Kavya. The thin layer which protects the nucleus, the outside membrane which is present in the nucleus is called as nuclear membrane. What is nucleolus? Nucleolus क्या है? Find it out. Nucleolus क्या है? What is nucleolus? A dense body inside the nucleus involved in the ribosome formation. Where is chromosome located? Chromosome कहाँ पे located है? MCQ question. Where is chromosome located? Write the function of chromosome. Chromosome क्या carry करते हैं? All together फटाफट बोलो. They carry. Write the composition of chromosome. क्या क्या present है? What is chromatin material? अगर पूछेंगे chromatin material क्या है तो क्या बोलोगे? A thread like in the nucleus. How do cell which lack a nucleus survive? अब मान लो कुछ ये क्वेश्चंस बुक के क्वेश्चंस है which I try to find it out एक एक लाइन के क्वेश्चंस. ठीक है, these are made by me and I truly followed the NCERT textbook with single each and every focusing on each and every single line कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है. So please don't ignore this. ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कुछ डायरेक्ट नहीं पूछे कि अब वो बोल रहा है कि हाउ डू सेल्स विच लैक अ न्यूक्लियस सर्वाइव. मान लो सेल जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं है वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो कैसे करेगा सर्वाइव? क्या यूटिलाइज करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज बिफोर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस. रिपीट करो आंसर. व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड? The DNA containing region of prokaryotic cell is called nucleoid. Name the cell in plant which lacks nucleus. कौन सा सेल है प्लांट में जो न्यूक्लियस लैक करता है? सीव ट्यूब सेल. कौन सी सेल है? सीव ट्यूब सेल इन द प्लांट विच लैक न्यूक्लियस. ये लर्न करना पड़ेगा. न्यूक्लियोइड क्या है? द DNA containing region of a prokaryotic cell. What are ribosomes? Ribosomes क्या है? A site of, अगर मान लो पूछते कि फंक्शन क्या है तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाट इज ER? ER मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रीड करो व्हाट इज ER. इन द साइटोप्लाज्म. फंक्शन ऑफ ER क्या है? रिपीट करो. सिंथेसिस ऑफ. What is Golgi apparatus? Golgi apparatus is the organelle which is involved in modification
पैकेज करना और सिक्रीट करना. फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस क्या है? लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर लाइजोसोम? अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? व्हाट वी से? साइड बैग्स. एंजाइम कंटेनिंग सैक्स. पढ़ो आगे. अगेन रिपीट इट. व्हाट आर लाइजोसोम्स? अगर फंक्शन पूछेगा तो व्हाट यू विल राइट द सेम थिंग. इट डाइजेस्ट वेस्ट. ठीक है. लाइजोसोम का फंक्शन ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है? क्या करता है लाइजोसोम? हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एग. राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अगर सिर्फ लिखोगे दे प्रोड्यूस एनर्जी, यू विल गेट हाफ मार्क्स. इफ यू राइट कंप्लीट सेंटेंस सेल्यूलर रेस्पिरेशन, you will get complete 1 marks. Why mitochondria is called the powerhouse of the cell? They generate energy for cellular activities. What are plastids? How many types of plastids? Can you name them? Explain chloroplast. क्लोरोप्लास्ट क्या है? दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस. राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक. ये आता डीएनए एंड राइबोसोम. दोनों की क्या सिमिलैरिटी है? किस किस की? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. बोथ पोजेसेस डबल मेम्ब्रेन डीएनए एंड राइबोसोम. व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? What is leucoplast? What is a vacuole? Why do plants look wilted when they do not get enough water? सेल क्या करता है? टगर प्रेशर जब लूज कर देता है तो प्लांट क्या हो जाता है? प्लांट क्या हो जाता है? विल्ट मतलब क्या होता है? सूख जाता है, पत्तियां गिर जाती है, मुरझा जाता है. डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट? कलरलेस पिगमेंट. गिव रीजन. दे लैक विजिबल कलर्ड. डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट? यस, दे मे कंटेन कलरलेस पिगमेंट और लैक विजिबल कलर पिगमेंट. मतलब ल्यूकोप्लास्ट, उनके पास में कौन से कलर के पिगमेंट नहीं प्रेजेंट रहते? क्या नहीं? ना उनके पास में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ना उनके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है. दे आर ल्यूकोप्लास्ट मीन्स इफ द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इज कलरलेस. ठीक है. चलो निकालो रजिस्टर. फटाफट क्वेश्चन कॉपी करो और आंसर अपने आप लिखो. I want you to write question number till question number 4 and try to write it on your own. If you require any help, then only you see the board. Quickly you are supposed to write all 52 answers, and these are purely from your NCERT textbook, and the language is also from your NCERT textbook. एक बार जब ये लर्न कर लोगे ना, you will realize कि NCERT का बुक तुमने पूरा रीड कर लिया है. ठीक है. I tried my level best to take out each and every question from your NCERT textbook. फटाफट करो क्योंकि मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगी फिर. बेटा न्यू ज्वाइनिंग समझा जो हमने किया अभी? न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर नेम? समझा आपको? फटाफट करो. जहाँ अटकोगे प्लीज आस्क मी. बिल्कुल बात नहीं करनी है, फटाफट काम करना. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर राइटिंग. यू शुड अंडरस्टैंड एंड देन ओनली यू शुड राइट इट डाउन, or else you can raise your hand and you can ask me your doubts.
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, नीटली लिखना, फेयर लिखना. एग्जाम के टाइम में राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन द डेट. एग्जाम के टाइम में जब आप पढ़ोगे ना तो यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि हमने जो भी लिखा है वो वाला ही सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में. Apart from notes, apart from reading the textbook, you are supposed to do these answers. बेटा लीव वन लाइन व्हेन यू आर राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, वो छोटा छोटा दिखेगा नहीं तुमको क्या लिख रही हो. न्यू ज्वाइनिंग, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी. And next time please carry one black pen or green pen or red pen with you. Write down the question with the colorful pen and answer with the blue pen. Make bio little interesting. 2 पेन कैरी करो, दो कलर के पेन कैरी करना क्लास में. टेक्स्ट बुक, नोट्स, your tuition register is important for you to carry whenever you have a bio class, along with the two colorful pens. ठीक है. Write down quickly. Done with till question number 4. Increase your speed. क्वेश्चन 3 पे हो, थोड़ा जल्दी करो बेटा, रुक नहीं सकते इतना देर देर तक के. Those who have completed question number 4, 7 तक के आ जाओ. एवरीबडी शुड राइट बिफोर लिविंग. आई विल चेक ईच एंड एवरीबडीज कॉपी. और नहीं किया हुआ रहेगा तो यही बैठ के लिखोगे अगले 1 घंटा.
सर वो अटेंडेंस ले लिया आपने? सर ने ग्रुप में डाला था ना अटेंडेंस लेने के लिए। ऑनलाइन कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये तो पुराने साल का है। यही हैं पूरे। इनका अटेंडेंस कैसे लोगे फिर? सर के नाम ले लेते हैं बस, जो नहीं है फिर वो ग्रुप पर भी नहीं डालते। कैसे करोगे? ग्रुप में डालना पड़ेगा ना जो एब्सेंट है। देखता हूँ। I did not ask you to talk. इतना स्लो करोगे तो आई कैन नॉट वेट। MM। If you have any doubt, you can ask me. जो छूट गया वो बाद में कर लेना, अब वो गैप छोड़ दो। आई कैन नॉट वेट। Till cell division. Till you have questions till this only.
We have already done the complete chapter also, but these are the 1 marker questions or from the NCERT language which I had taken out as like the questions. एग्जाम के लिए सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हो. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गो थ्रू द नोट्स, रीड द टेक्स्ट बुक एंड रीड दिस क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. एंड अपार्ट टू दिस आई विल बी डूइंग फ्यू वर्कशीट ऑल्सो दैट यू कैन डू. Okay, we'll stop here. I'll do one worksheet with you all first. Let's start with these questions. Tomorrow you have test, no? Science का paper है ना? So let's do these questions first. Why do plant require a rigid cell wall whereas animal cell do not possess one? पढ़ो ये आंसर. Wind and rain, so they need a rigid cell wall for the structural support and to stay upright. ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में तुमको दिया था ये क्वेश्चन. डू यू रिमेंबर दिस? शॉर्ट क्वेश्चन जो ग्रुप में मैंने भेजा था उसमें ये दिया था. नेम द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट दैट मेक अप द प्लांट सेल वॉल एंड मेंशन इट्स रोल इन द ह्यूमन डाइट. Carbohydrate is cellulose. In human diet, it acts as a roughage which helps in digestion. Apart from plants, name 2 other types of microbes mentioned that possess a cell wall. Fungi and bacteria. Can you write this answer? ये लिखोगे क्या आंसर? मैंने तुमको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ना, मे बी दिस कैन कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, टुमारोज एग्जाम. सो राइट डाउन द आंसर. For short question, it is question number 11. Question I have already given. Write down the answer. करो उसको. तुम्हारा लिखा है तुम्हारे पास में, then you don't write it. जिसके पास लिखा है don't write it. ये सर मुझे व्हाट्सएप कर दो ना. ये मुझे व्हाट्सएप कर दो. जिसने होमवर्क भी नहीं किया वो भी व्हाट्सएप. तो ये भी ग्रुप में डाल दो एब्सेंट स्टूडेंट्स. There are many schools apart from Center Point, no? So let them write. Yes. Did I ask you to talk? Short question, question number 11. Learn these answers nicely. क्वेश्चन क्यों लिख रही हूँ? मैंने ग्रुप में डाला है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 है. आई डिड नॉट आस्क यू टू टॉक. Done?
कल के लिए ये तैयारी करना क्वेश्चंस की, टुमारोज टेस्ट. हाँ, रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस. Plants cannot move to escape environmental stresses like wind and rain. So need a ये environment stress, wind, rain, तो इसलिए इनको क्या लगता है? A rigid cell wall for structural support and to stay upright. Primary carbohydrate is cellulose. In human diet, cellulose act as a roughage which helps in digestion. Two other type of microorganism that possess a cell wall. Cell wall किसके पास रहती है? Fungi and bacteria. Done. Next question. Identify the organelle described as a cleanup system. Cleanup system क्या है? कौन सा? Lysosome. What specialized substance is contained within these sacs that allow them to digest unwanted protein, fats and carbohydrates? तो lysosomes किसके के पास में क्या रहता है? A powerful enzyme capable of breaking down complex molecule and damage cell parts. What happens to the broken down product after the organelle complete its task? The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm where they may be reused in other cellular processes to keep the cell healthy. समझा? क्या करते हैं वो? ब्रेक डाउन होके कहाँ पे रिलीज होते हैं? दे गेट रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में वो कौन यूज कर लेता है? सेल रीयूज कर लेता है एंड टू कीप देम हेल्दी इन अदर सेल्यूलर प्रोसेस. अदर सेल्स यूज देम टू कीप दैट सेल हेल्दी. लिखो ये आंसर. कौन सा शॉर्ट का कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 इन शॉर्ट क्वेश्चन. राइट डाउन द आंसर. जल्दी करो, शीट भी करवानी है मुझे. डन. लिख लियो. Excuse me, ma'am, your screen isn't visible. Screen is not visible. Are you not able to see the screen? दिख तो रही है स्क्रीन में. Online students, are you able to see the screen? Myra, check your network. Yes, ma'am. Write down quickly. I need to revise the sheet also.
Done? Next question. What is the significance of two-walled membrane of mitochondria? क्या है? The outer membrane is porous while inner membrane is deeply folded, which increases the surface area for ATP generating chemical reaction. शॉर्ट का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10. Write down quickly. And for tomorrow's test, please revise all these questions. Done? Write down quickly. Next question. Differentiate between mitosis and meiosis. लिखो. The process by which a cell divides for growth. Meiosis, the process by which reproductive cells are formed. Forms 2 daughter cells, forms 4 daughter cells. Daughter cells have same number of chromosomes. Daughter cells have half number of chromosome as that of parent or mother. ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कल के टेस्ट में दिया है मैंने. डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. 3 मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे. Even diagram of plant cell and animal cell, one diagram is being given. So practice diagram of plant cell and animal cell. Learn all these question answers, and very short question is differentiate between mitosis and meiosis. मैंने ग्रुप में डाला था डायग्राम. बाकी लेबलिंग नहीं दिख रहा तुमको बरोबर से. स्कूल में नहीं ड्रॉ करवाया तुमको डायग्राम? अभी तक ये नहीं कराया. रेफर योर टेक्स्ट बुक फॉर द लेबलिंग. रेफर योर टेक्स्ट बुक. डायग्राम वो देख लो. रेस्ट यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक. Yes, refer your textbook. Diagram is like you have drawn it nicely, but refer your textbook for it. Yes, नहीं ये पूरा सर्कल करना. ये ऐसा नहीं रहता अंदर घुसा हुआ. पूरा सर्कल करो. लिखा है तुम्हारे पास में लिखा हुआ. इवन यू हैव दिस. काव्या लिख लिया? दिखाओ एक मिनट.
सर इसका एक पिक्चर लेके ग्रुप में डाल दोगे क्या? यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक. Those who have missed writing this, I am like sending in the group. You can find it right from there also if you want. See the labeling. You wanted labeling, no? Just check the labelings. Plant cell, animal cell. Cell wall is present in plant cell. Cell wall is absent. These are the labelings. सर इसको भी ले लोगे क्या एक बार? ये यहाँ से ही ले लोगे. Stop talking. ये. नहीं 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 नहीं. So we'll do quickly MCQ. Which organelle act as a cell post office by sorting and packaging? Thermophiles are the organism that specifically adapted to survive in. Which organelle is responsible for generating the energy for the cell? What is the function of cell membrane? Cell membrane, not cell wall. Huh? Cell membrane का क्या function है? To regulate what enters and leave the cell. Which organ is responsible for protein synthesis? Breaking down and recycling cellular waste from foreign substances. Plays a crucial role in modification, protein modification. Responsible for generating most of the cell energy through respiration. Which organelle is responsible for storing genetic information? Which movement of water molecule from higher concentration to lower? What is the term of the solution that has same concentration of solute? A farmer notices his plant are wilting despite of adequate watering. What could be the possible reason? And how could it related to osmosis? क्या होगा? The soil might be causing the water leading to wilting. Assertion and reasoning. Every multicellular organism has to come from a single cell. तो ये छोड़ दो, ये अपने मन से करना. डन. किसी को कुछ डाउट है? सर ने डायग्राम भेजा है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का. डू इट नाइसली.
आया